बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। Chapter number 31 Active Passive Voice. Post view of lecture related to future perfect. I shall have eaten apple. मैं सेब खा चुका हूं. Object plus will या shall have plus been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट शुरू में उठकर लास्ट में ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में, फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस. आई शैल हैव ईटन एप्पल, मैं सेब खा चुका हूंगा. इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम वही फार्मूला. एप्पल को उठाकर शुरू में ले आए, रेड एरो से आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद एप्पल के साथ हमारा विल हैव लगेगा, विल हैव लगा दिया, साथ में बीन, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हमारा सब्जेक्ट जो लास्ट में आया, जो शुरू में सब्जेक्ट था वो यहां पर आकर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि बी, यानी कि मी. फॉर्मूला विल हैव और शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. राम विल हैव टेकन टी, टी विल हैव बीन टेकन बाय राम. आर्किटेक्ट विल हैव डन वैल्यूएशन, valuation will have been done by the architect. Umesh Arora will have written book. The book will have been written by Umesh Arora. Pooja will have done arranged marriage. Arranged marriage will have been done by Pooja. He will have given quick response. Quick response will have been given by him. They will have passed the IELTS paper. IELTS paper will have been passed by them. Robbers will have robbed Raghav. Raghav will have been robbed by robbers. Teacher will have prepared notes. Notes will have been prepared by the teacher. However, this topic we are about to do is not related to passive voice, but as we do 2 topics per day, this is the second topic of the day. The same thing, questions asking WH family. Use of where to know about a place. इसका फार्मूला बहुत सिंपल है. सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि WH फैमिली सेंटेंस के शुरू में आती है, तो वेयर भी हम शुरू में लगाएंगे. वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस subject plus rest of the sentence plus question mark. Where do you live? Where does he live? Where did he work? Where is Sudesh working? Where are they going? Where has she gone? Where was he going? Where were they organizing the program? Where had you gone yesterday? Where had you been working since 2005? Where shall I go for work? Where will police catch the thief? Where shall we be wandering tomorrow? Where will they have reached? Where had you been working since 2015? Where will you have been working since Monday? Where did you go yesterday? Where will you marry? Where did you hear this? Where do you live in Chandigarh?